Welcome to Guru Mela everyone. Today we will talk about Rustamji's development at a Bhanduk location which is the Rustamji Bela. This is a soft launch basically. Rustamji has their own land parcel in Bhanduk which is of 2 acres. This is the only development, only branded development in Abando. So we will understand about this development. First we will talk about the location. इसका जो लोकेशन है दैट इज ऑन एल बी एस रोड और यू कैन से ऑन एल बी एस रोड इट इज अपोजिट टू शांग्रला बिस्किट कंपनी. So if you are moving from Mulund to Bhandup and you are at a Sonapur signal, then you have to travel for 5 to 10 minutes. There is a petrol pump on the left hand side. Just behind that, this is the 2 acre land parcel. यहाँ पे अगर स्टेशन देखेंगे हम लोग तो भांडुप और नाहूर स्टेशन ये दोनों स्टेशन आर 10 मिनट्स अवे फ्रॉम रुस्तम जी बेला. और जो नया शांग्रीला मेट्रो स्टेशन आ रहा है दैट इज हार्डली 2 मिनट्स बिकॉज it is 50 meters away from the LBS road. The project is 50 meters away from the LBS road. So this was about the location. Now we will understand the project details. ये जो लैंड पार्सल है ये 2 एकड़ का लैंड पार्सल है. दिस इज फुल्ली ओन्ड बाय द रुस्तम जी. हियर रुस्तम जी इज कमिंग अप विद 2 टावर्स जिसमें दो दो विंग्स होंगे. सो बेसिकली इन 2 acres ओनली 2 टावर्स. Yes, in this development they are coming up with the commercial also which is of 2 story tower. कमर्शियल यहाँ पे आने का बेनिफिट ये है कि यहाँ के रेसिडेंट्स के नीड दैट विल सेटिस्फाई एंड द नीड्स ऑफ द सराउंडिंग्स आल्सो. इट विल एनहांस द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर श्योर. अभी के लिए इसमें एक ही टावर लॉन्च हो रहा है, उसमें दो विंग्स है. ठीक है. ये टावर्स जो रहेंगे ये 19 स्टोरी के टावर्स रहेंगे और इसका पोजीशन वी आर एक्सपेक्टिंग इन 2 years डाउन द लाइन. अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस रुस्तम जी बेला हैज. सो बेसिकली इट हैज 1 and 2 BHKs. 1 BHK में कारपेट्स है. देर आर 4 डिफरेंट वेरिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 326 कारपेट टू 425 कारपेट विच इज अ रेरा कारपेट. सो इट्स नॉट यूजेबल, इट इज रेरा. सो 2 BHK में उनके पास 520 एंड 576 के कारपेट है. अगेन दिस आर रेरा कारपेट्स, नॉट यूजेबल कारपेट्स. First, in the first place, we can see the carpet sizes which we will find small, but actually these are smartly designed layouts with a zero wastage. Once we will see the layout, we will understand because there is no compromise in the room sizes. Now we are coming up to the pricing part of it. So basically as I earlier mentioned, this is a soft launch by Rustamji Group. So whenever there is a soft launch, there are multiple offers, this development also has the multiple offers. And currently we are in a process of EOI, so it's a expression of interest. So what to understand the pricing in a better way, what I would suggest is you can call on the following helpline number and we will help you to understand the pricing thoroughly. Now we will talk about the possession. As we know, we have a possession in 2 years. This is only possible because these are 19-story towers. So the management thought rather than building up the high story towers which takes more than like 5 to 6 years normally, we will build the 19-story towers and we will give the position in 2 years only. So along with the value for money, we will deliver it in a very short period of time, and which is practically very much possible. पेमेंट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं इसमें, तो पेमेंट स्ट्रक्चर में हम लोग ला सकते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान. उसके अलावा सबवेंशन ला सकते हैं जिसमें आप अभी कुछ अमाउंट पे करके लेटर ऑन यू कैन पे सर्टन अमाउंट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और मे बी ऑन अ पोजीशन, जिसमें अगर बैंक इन्वॉल्व है तो बैंक सबवेंशन रहेगी, और अगर नहीं है देन इट विल बी बिल्डर सबवेंशन. और एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है बुलेट पेमेंट प्लान का, जिसमें यू पे सर्टन अमाउंट, नाउ आफ्टर गैप ऑफ सर्टन टाइम यू पे अगेन सर्टन अमाउंट. सो द गैप मे बी ऑफ 3 months or maybe of 6 months. So that kind of payment plan we are thinking about. So but eventually we will come to very good payment plan.
For more details about the project like payment structure, pricing, anything, you have any doubt, if you want to visit the site, then you can reach us on the following numbers which are flashing on the screen continuously. And the last but not the least, I will just explain the EOI process which I have earlier mentioned. So whoever is interested in this project, let's say for 1 BHK we have to pay like 50,000 check, and for 2 BHK it's a 1 lakh check. The checks are non-bankable, it's only a check, not the actual money. And on that basis we are going to block the floor preference, unit preference, and there is an additional benefit with the EOI which we will also block when we will launch it in this in coming time. If you are okay with everything, then you can go ahead with the same. Otherwise you can take your check back, no questions asked.